Pygmalion drama in Bernard Shaw with a critical analysis, actualized summaries, questions and more. इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा. आपको क्या चाहिए, कोई क्वेरी हो तो कुछ सब कुछ मिल जाएगा. A romance in 5 acts. So let's see inside the book. The book is a Orient black shun, and so then general introduction. से ये आपको पढ़ना होगा, इतना ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा. इंट्रोडक्शन के बाद मैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ Pygmalion. So Bernard Shaw took the title of this play from an ancient Greek legend which has been retold by several later writers in differing forms. In the most familiar version, Pygmalion falls in love with a statue that he has made. It a Greek myth है. Aphrodite, the goddess of love called Venus by the Romans, turns the statue into a living woman named Galatea, who then becomes Pygmalion's wife. So in Shaw's play, Henry Higgins, a professor of phonetics, stands for Pygmalion, and Eliza Doolittle, an uneducated girl who sells flowers in London Street, stands for Galatea by teaching her to speak as educated people do, using correct grammar, proper vowel sound, careful pronunciation, and a pleasing tone of voice. Higgins makes it possible for the poor ignorant flower girl, after a few months, to go among cultured and aristocratic people without anyone detecting or suspecting that she was born into different social class. This is no more than a professional experiment to Higgins, who takes no interest in Eliza as a living woman, but a concern with her only as a human taking machine. So एलिसा को एक टेस्ट किया गया, उसकी मैनर एंड कल्चर्ड एडुकेटेड गर्ल बना दिया गया, उसकी फीलिंग्स की कोई ज़रूरत ही नहीं समझा प्रोफेसर हेनरी हिगिंस ने. So Shaw was greatest modern master of paradox. He delighted to take familiar situations and ideas and turn them upside down or back to front so that they might be seen from a different angle. That is what he does in the present play. For when Eliza Galatea comes alive as a new woman, Higgins Pygmalion is not in love with her as a sculpture was in the old legend, and though she cries, "What I am fit for? What have you let me fit for? Where am I to go? What am I to do? What's to become for me of me?" Her sense of belonging, neither of her old life nor to any new way of life, only makes Eliza the more determined not to become dependent upon Higgins. And the play ends with her leaving his house. What happens to her afterwards is told in the story which Shaw added to the pointed play. सो इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छा लिखा है, बहुत ही अच्छा लिखा जो प्ले में एक्चुअली आपको क्या मेन है डिस्कशन में. सो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा. पैगमिलियन इज़ नॉट ए रोमांस. एक्चुअली पैगमिलियन यहाँ पे हेनरी हिगिंस और एलिसा को लास्ट इन द एंड में हैप्पी एंडिंग नहीं दिया गया. इसके एक ही कारण है, फेमिनिस्ट व्यू से एलिज़ा को प्रेजेंट किया गया है. एलिज़ा एक फेमिनिस्ट की तरह खुद ही अकेले में वो प्रोटेस्ट करती है, प्रोटेस्ट करके दिखा देती है एक्चुअली
he is not a weak person. So it is a word problem. The problem in Pygmalion, therefore is like the word problem of education. So इस प्ले में एडुकेशन की एक बहुत बड़ी एक इंट्रोडक्शन एक डिस्कस किया गया है। एडुकेशन की मतलब क्या है? एडुकेशन की मतलब से पढ़ना नहीं, उनकी इनसाइड में भी बहुत एक फीलिंग और इमोशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं मोरली और एथिकली। सो एलिसा की एडुकेशन की बात तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट ओमन हो जाती है। To educate is to give new life to those who received the education, and the new life produce discontent with exciting circumstance and create the desire for a different kind of world. In places where the spread of education has led to personal and social unrest, any teacher might be told, as Eliza tells Higgins, "You never thought of the trouble it would make for me." To which Higgins replies, "Would the world ever have been made if its maker had been afraid of making troubles?" Making light means making troubles. This word problem is presented in Pygmalion, though the median of a lesser theme, which is a national one, confined to the English who wrote Shaw have no respect for their language. Actually यहाँ पे जो कॉकनरी इंग्लिश है, some classes, middle class people और lower classes people बिल्कुल भी वो एक एरिस्टोक्रेट पीपल की तरह बातें नहीं कर पाती है। इंग्लिश की जो क्रिटिसाइज़ किया गया है खुद की। देन कम्स यहाँ पे कुछ लिखा गया है, डिस्कशन किया है, बहुत सारा चीज़ है, अब थोड़ा सा पढ़ सकती हो। बहुत कुछ है इस बुक में। सो मैं थोड़ा बुक की एंड में दिखाती हूँ। एक्ट वाइज समरी भी है, नोट है बुक में। एंड में थीम है, मैं थीम को थोड़ा डिस्कस करूँगी। ओके, सो क्रिटिकल एनालिसिस। सो थीम को थोड़ा आपको देखना होगा। सो Pygmalion, the title. First of all, the title, then the theme of class. ओके, थीम ऑफ क्लास को थोड़ा आपको देखना होगा। आप इस बुक को परचेस कर सकती हो इन शॉप से। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा इस बुक को पढ़ने में, थोड़ा से भी बोरिंग आप नहीं होंगे। द थीम ऑफ एडुकेशन भी है, आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। और आपको कुछ क्वेरी होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकती है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्मेशन, हर ट्रांसफॉर्मेशन इज देयरफॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। द थीम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी। एक्चुअली क्या हुआ, अपीयरेंस और रियलिटी बहुत ही डिफरेंट हुआ। क्या होना चाहिए और क्या हो गया, ऐसे मतलब आपको अच्छा से पढ़ना होगा। एक 20 मार्क्स के आंसर के लिए बहुत कुछ पढ़ना होगा और अच्छे से समझने के लिए भी पढ़ना होगा। मैं डिटेल में सब कुछ दिखा रही हूँ, जैसे कि आप आंसर खुद पे खुद लिख सकती है। थोड़ा सा सोच के आप आंसर लिख सकते हैं। Why Elisa rejecting Henry Higgins? Actually, because of
Every human being have a heart and their oath is important for everyone. हिगिंस एटीट्यूड टू वुमेन थोड़ा सा है. Society on freedom and speech. Characters in the play. First of all, Henry Higgins. Eliza Doolittle. So, guys, more things in this book. General notes and questions are everywhere. So, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया. मैं कुछ डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. आपको कुछ चाहिए तो मुझे ईमेल कर सकती है और कमेंट में पूछ सकती है. So, thank you so much.